Good afternoon to all. Uh, I hope it's good to be around you again. So to continue with laws of motion, let us quickly revise what we have done in the previous lecture, and we can go with the further topic, right? In the previous lecture, we have came across something called as physical quantities. Now, physical quantities, मतलब क्या? Anything which you can measure. अभी फिजिकल क्वांटिटीज ये दो टाइप्स के देखे अपन ने. फर्स्ट इज स्केलर क्वांटिटी एंड सेकंड इज वेक्टर क्वांटिटी. अभी स्केलर क्वांटिटीज ये कौन से क्वांटिटीज होते हैं? तो ये क्वांटिटीज जो हम लोग सिर्फ वैल्यू से डिफाइन करते हैं. मतलब वैल्यू 100, 200, 300, 5. सो सिर्फ वैल्यू से जो क्वांटिटीज डिफाइन करते हैं उसको अपन बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज. एग्जाम्पल है मास, टाइम, 50 kg, 5 मिनट्स. मतलब क्या? हमने सिर्फ वैल्यू से अपने को उस क्वांटिटी का इंफॉर्मेशन मिल गया. द सेकेंड टाइप ऑफ क्वांटिटी इज नथिंग बट वेक्टर क्वांटिटी. Vector quantities are the quantities which are described by two things. First is value, that is magnitude, and दूसरा होता है, can you recall दूसरा क्या है? दूसरा है direction. Very nice. So here we talk about value, that is magnitude, and direction. तो उसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी. उसके बाद हमने देखा कि हर क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने के लिए यूनिट्स होता है. जैसे मास का यूनिट होता है केजी, वॉल्यूम का यूनिट होता है लीटर. तो वी हैव सीन दैट कि अलग अलग यूनिट्स होते हैं अलग अलग क्वांटिटीज के लिए, राइट? सो नाउ यूनिट हमने दो टाइप्स के देखे थे. याद है आपको कौन से थे? फर्स्ट वाज MKS unit and second was CGS unit. Can you recall what MK stands for? MK stands for meter, kilogram, second. And what does CGS stands for? Centimeter, gram, second. अच्छा, can you now identify MKS एंड CGS में से एक ऐसा यूनिट था जिसका दूसरा नाम भी था? उसका था नाम SI यूनिट. SI यूनिट किसके लिए था? MKS के लिए था या SI के लिए? सॉरी, MKS के लिए था या CGS के लिए था? SI था. SI यूनिट था MKS यूनिट्स के लिए. तो MKS यूनिट्स का दूसरा नाम इज SI unit. So this is what we have seen in the previous lecture. Now further moving on, what we are going to do is we are going to learn about different physical quantities. तो उसमें से the first quantity we are going to learn is distance and displacement. क्या पढ़ने वाले अपन? Distance and displacement. So let us understand what is distance and displacement and उनके बीच में difference क्या है. What do you understand by distance and what do you understand by displacement? So let us see the concept of distance and displacement. Now here, if you can see, यहाँ पे on the board you can see 3 points है, A, B, C. A से लेके B के बीच में 5 मीटर का डिस्टेंस है. B से लेके C में 5 मीटर का डिस्टेंस है. So now here, in order to understand distance and displacement, we are going to see, take an example. So now if you try to understand, मैं क्या करता हूँ? पोजीशन कंसिडर करता हूँ A से B. मतलब एक ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? तो वो ऑब्जेक्ट A से B पे जा रहा है. किधर से किधर जा रहा है? A से B. Now before coming to distance and displacement, let me tell you one thing. डिस्टेंस क्या होता है? तो डिस्टेंस होता है द एक्चुअल पाथ फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट. क्या बोला मैंने? द एक्चुअल पाथ फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट. एंड डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या? तो डिस्प्लेसमेंट मतलब द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी फ्रॉम स्टार्ट पॉइंट एंड एंड पॉइंट.
मैं वापस रिपीट करता हूँ. व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. मतलब एकदम छोटा सा डिस्टेंस. मतलब क्या? एकदम छोटा सा डिस्टेंस. कहाँ से? स्टार्ट पॉइंट से लेके एंड पॉइंट तक उसके जर्नी का. सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. सो लेट अस से मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जो ए पोजीशन पे था. कहाँ पे था? ए पोजीशन पे. अभी ऑब्जेक्ट ना क्या किया? ए से बी पे गया. कहाँ पे गया? ए से बी. सो ऑब्जेक्ट गया ए से बी पे. ऑब्जेक्ट गया ए से बी पे. अभी जैसे ही ऑब्जेक्ट ए से बी पे गया, उसने एक्चुअल पाथ या एक्चुअल जो लेंथ था वो कितना कवर किया? तो उसने किया 5 मीटर. तो ए से बी का डिस्टेंस इज 5 मीटर. कितना है? 5 मीटर. Now let us try to recall the definition of displacement. मैंने क्या बोला था? डिस्प्लेसमेंट मतलब एकदम छोटा सा डिस्टेंस या एकदम शॉर्टेस्ट पाथ. शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन स्टार्ट पॉइंट एंड एंड पॉइंट. अच्छा, यहाँ पे स्टार्ट पॉइंट है ए, एंड पॉइंट है बी. तो एकदम छोटा सा डिस्टेंस या एकदम छोटा सा distance is nothing but how much? It is 5 meter. Further moving on, next way, next case में we consider object moving from A to B and B to C. तो ऑब्जेक्ट पहले A से B पे गया and वो ऑब्जेक्ट C कंटिन्यू किया. तो अभी व्हाट इज द एक्चुअल पाथ ट्रैवल या एक्चुअल डिस्टेंस ट्रैवल? तो टोटल कितना हुआ? ये 5 प्लस ये 5. सो डिस्टेंस इज हाउ मच? 5 + 5, दैट इज 10 मीटर. फर्दर इफ यू सी, मुझे अभी क्या ढूंढना है? डिस्प्लेसमेंट ढूंढना है सेकेंड कंडीशन के लिए. तो सेकेंड कंडीशन के लिए डिस्प्लेसमेंट में जब भी ढूंढता हूं तो भी मुझे क्या देखना है? दो चीजें देखनी है. मेरा स्टार्ट पॉइंट कौन सा एंड मेरा एंड पॉइंट कौन सा. तो स्टार्ट पॉइंट इज ए, एंड पॉइंट इज सी. तो उसके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है? तो 5 + 5 अगेन 10 मीटर. कितना है? 10 मीटर. सो यहाँ पे डिस्टेंस भी सेम है, डिस्प्लेसमेंट भी सेम है. डिस्टेंस भी सेम है, डिस्प्लेसमेंट भी सेम है. फर्दर मूविंग ऑन, अभी मैं क्या करूंगा? वो ऑब्जेक्ट है ना, वो क्या करेगा? पहले आगे आया, अभी ऑब्जेक्ट जाएगा पीछे. मतलब ऑब्जेक्ट मुड़ के आ गया वापस पॉइंट बी पे. कहां पे आ गया? वापस पॉइंट बी पे. सो नाउ इफ यू ट्राई टू सी, डिस्टेंस ढूंढना है मुझे. तो डिस्टेंस कैसे पता चलेगा? डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ. मतलब क्या? ए से बी, बी से सी, सी से वापस बी. मतलब कितना हुआ? 5 + 5 10 प्लस वापस पीछे 5 15. सो डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज 15 मीटर. वेर एज डिस्प्लेसमेंट ढूंढने के लिए मुझे क्या ढूंढना है? वापस याद करो, डिस्प्लेसमेंट के लिए आई हैव टू कंसिडर इनिशियल पॉइंट, दैट इज स्टार्ट पॉइंट एंड एंड पॉइंट. स्टार्ट पॉइंट एंड एंड पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है? तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है 5 मीटर. कितना है? 5 मीटर. सो डिस्प्लेसमेंट इज 5 मीटर. अभी यहाँ पे देखो, डिस्टेंस ज्यादा है, डिस्टेंस ज्यादा है. ए टू बी, बी टू सी, एंड सी से वापस बी. ए टू बी, बी टू सी, सी से मुड़ के वापस बी. तो ये पॉइंट पे या ये पोजीशन पे डिस्टेंस इज 15 मीटर, वेयर एज डिस्प्लेसमेंट इज 5 मीटर. एंड द लास्ट वन, अभी क्या हुआ? ऑब्जेक्ट था ए पे, ए से गया बी पे, बी से गया सी पे, सी से वापस मुड़ के आया बी पे, एंड देन बी से वापस आया ए पे. मतलब ऑब्जेक्ट क्या हो गया? उसके वापस से सेम पोजीशन पे पहुंच गया, सेम पोजीशन पे पहुंच गया. सो इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, उससे टोटल डिस्टेंस या उसका एक्चुअल पाथ कैसा था? ए से बी दैट इज 5, बी से सी दैट इज अगेन 5, सी से बी दैट इज अगेन 5, and B से A that is again 5, that is total is 20 मीटर. 5 बार 4 बार 5 that is 20 मीटर.
But now, if you can just see, start point भी A है, end point भी A है. So my question to you is, अगर start point and end point दोनों same रहेगा, तो उसमें एकदम छोटा सा एकदम minimum distance कितना होना चाहिए? The minimum distance is going to be 0 meter. कितना रहेगा? 0 meter. So here the displacement is going to be 0 meter. So here, if you try to understand, तो यहाँ पे distance is a distance is equal to displacement. यहाँ पे distance is equal to displacement. इन दोनों में से कौन बड़ा है? Distance बड़ा है या displacement बड़ा है? Correct. Distance is greater than displacement, and last case में distance is greater than displacement. So here, from the above statements, I can understand that distance होता है the actual path traveled by the object. Distance होता है the actual path traveled by the object. And what is displacement? Displacement is the shortest distance, the shortest distance between start point and end point. So let us see the slides of this particular topic. So let me just start with the distance, and we have understood what is displacement. तो एग्जाम में 2 मार्क का क्वेश्चन आता है, differentiate between distance and displacement. So here, to distinguish between distance and displacement, the first point is going to be definition. What is the first point going to be? The first point is going to be definition. So definition of distance is nothing but the actual path followed by the body. What is it? Actual path followed by the body. And displacement का क्या होता है? याद करो, displacement shortest distance. क्या बोला था मैंने? The shortest distance between which 2 points? Between start point and end point. Start point is also called as initial point and end point is also called as final point. तो दोनों में से कुछ भी लिखा तो भी आपको चलेगा. अभी अगर आपने देखा था, ये जो डिस्टेंस है, आगे जाऊं या पीछे जाऊं, इससे मेरे डिस्टेंस को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था. वो तो बढ़ते जा रहा था, वो तो बढ़ते जा रहा था. पहले 5 था, फिर कितना हुआ? 10 हुआ, फिर 15 हुआ, फिर 20 हुआ. मैं पीछे मुड़ा, फिर भी डिस्टेंस क्या हो गया? बढ़ते गया. दिस मीन्स दैट डिस्टेंस का डिस्टेंस का डिस्टेंस का डायरेक्शन से कुछ फर्क नहीं पड़ता. Therefore, distance is a scalar quantity. What is distance? Distance is a scalar quantity because it just depends upon the value. उससे उसका डायरेक्शन से कोई फर्क नहीं होता. Whereas डिस्प्लेसमेंट में याद करो, डिस्प्लेसमेंट में हमने क्या देखा था? डिस्प्लेसमेंट में वी सॉ दैट जैसे ही मैं पीछे जाने लगा, आगे आ रहा था तभी बढ़ रहा था, बट जैसे ही मैं वापस रिवर्स डायरेक्शन में पीछे जाने लगा, मतलब मेरा डायरेक्शन चेंज हो गया. जैसे ही डायरेक्शन स्टार्टेड चेंजिंग, I saw that the displacement again started reducing. So this means that, can I say displacement depends upon the direction? Yes, the displacement depends upon the direction as well. So can you guess वो कौन सा quantity होगा? हमने पढ़ा था, right? The quantity is nothing but the vector quantity. So displacement is an example of vector quantity. Abhi, in the last example, we have seen that distance and displacement equal भी हो सकते हैं, या distance can be greater than displacement. Distance and displacement equal भी हो सकते हैं, या distance is greater than displacement. So the third point of distinguish is the distance is either equal to or greater than displacement. What is the third point? Can you read it together? The third point says the distance can either be equal to or greater than displacement. अभी इसमें ना डिस्प्लेसमेंट के लिए अपने को पॉइंट बनाना है, तो उसमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा.
कैन यू थिंक अबाउट इट, कैन यू थिंक अबाउट वो चेंज क्या आएगा? सो लेट अस ट्राई टुगेदर। क्या आएगा वो डिस्प्लेसमेंट का थर्ड पॉइंट? तो डिस्प्लेसमेंट इज आइदर इक्वल टू और ग्रेटर देन के बदले क्या आएगा? लेस देन डिस्टेंस। क्या आएगा? लेस देन distance. Let us see we have done it correct or not. Yes, absolutely correct. The displacement ka third point is going to be it is either equal to or less than distance. So these are the 3 points of differentiation between distance and displacement. So let us quickly revise all the 3 points together. तो हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले पहला पॉइंट देखते हैं. What is first point of distance? Distance क्या होता है? डिस्टेंस होता है द एक्चुअल पाथ. सिर्फ उसमें एक हिंट रखने का, याद क्या याद रखने का? डिस्टेंस मतलब एक्चुअल पाथ. डिस्टेंस मतलब एक्चुअल पाथ. सो व्हाट इज डिस्टेंस? डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट बिटवीन द पॉइंट्स इन विच इट मूव्स. तो ये हो गया अपना डिस्टेंस का डेफिनेशन. डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? याद करो वो हिंट क्या था? डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट shortest distance. क्या याद आया हिंट? shortest distance. Shortest distance between what? Shortest distance between start point या initial point and end point मतलब final point. So this is the first point of differentiation. अभी याद करो second point क्या था? Second point, distance is which kind of quantity? Distance is a scalar quantity, whereas displacement is a vector quantity. And the last point कौन सा था? The last point was distance. The last point was distance is greater than or it is greater than or equal to displacement. And उसका उल्टा point क्या हो गया displacement में? Displacement में उसका उल्टा point हो गया displacement is equal to or less than distance. So this is a very important differentiation between distance and displacement. So now what you can do is um, let me just complete with the next part of the topic. Then if time permits, what we can do is we can make a note of this particular differentiation, right? Achha, moving on. The second physical quantity which we are going to talk about is nothing but speed and velocity. अच्छा स्पीड बोलते हैं ना, क्या स्पीड में भागता है? Yes, you have come across this quantity. कछुआ कैसे जाता है? कछुआ जाता है स्लो, मतलब उसका स्पीड कैसे रहता है? कम. Whereas velocity is associated to it is also a quantity which is associated to different uh, different scenarios. Let us see those one by one. So now here again a very important differentiation which comes into the in exams, that is difference between speed and velocity. Let us talk about speed. Speed है ना, गाड़ी का स्पीड होता है ना, कैसे मेजर करते हो? तो स्पीडोमीटर से. द नेम इटसेल्फ सजेस्ट स्पीडोमीटर मतलब क्या? गाड़ी का स्पीडोमीटर होता है, कैसे रेंज जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसपे आपको स्पीड दिखाता है गाड़ी का. So here speed is given by speedometer in the vehicle. Whereas velocity है ना, विंड का वेलोसिटी बताता है. विंड का भी स्पीड होता है, बट अगर आप देखोगे विंड का जो स्पीड होता है या विंड का जो फ्लो होता है उसका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है. इट्स आइदर it either flows in north direction, south direction, east direction, west direction. So if you try to understand, velocity is also similar to speed. The only difference is the object which moves, it contains a particular direction associated to it, right? So here we have concept that is speed and velocity. So now again in exams you have to write the distinguished points. सबसे पहला point कौन सा होता है? तो सबसे पहला point होता है differentiation का, that is the definition. So what is speed? The speed is, अच्छा speed का definition याद रखना है ना, तो हम लोग स्पीड का डेफिनेशन कैसे याद रखेंगे? तो उसके फॉर्मूला से याद रखेंगे. कैसे याद रखेंगे? उसके फॉर्मूला से. इफ यू कैन रिकॉल
Speed का formula is, let me show the formula. What is speed is equal to? Speed is equals to distance upon time. What is speed equals to? Distance upon time. याद है आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है? What is speed equals to? Distance upon time. अच्छा, अगर मुझे फॉर्मूला पता होगा, now listen to me very carefully. अगर मुझे फॉर्मूला पता होगा तो मुझे डेफिनेशन बनाना बहुत सिंपल है. कैसे बनाने का देखो. नाउ जब भी कोई भी फॉर्मूला में अपॉन टाइम आता है, क्या बोला मैंने? कोई भी फॉर्मूला में अपॉन टाइम आता है तो हम लोग उसको बोलते हैं यूनिट टाइम. क्या बोलते हैं उसको? यूनिट टाइम. तो अभी देखो जरा, यहाँ पे ध्यान दो. स्पीड स्पीड इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी पर यूनिट टाइम. मैंने क्या बोला? कैसे बनाया मैंने डेफिनेशन? देखो, स्पीड is distance covered by body per unit time. टाइम डिवाइडेड बाय टाइम है तो उसको हम लोग डेफिनेशन में कैसे दिखाएंगे? पर यूनिट टाइम. एवरीबडी अंडरस्टूड दिस? सो अगर आपको फॉर्मूला पता होगा तो आप डेफिनेशन एकदम आराम से बना सकते हो. सो व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ स्पीड? अगेन कैन यू रिपीट इट? कैन यू ट्राई इट ऑन योर ओन? आपको फॉर्मूला क्या है पता है? फॉर्मूला ऑफ स्पीड इज, स्पीड is equal to distance upon time. What is it? Speed is equal to distance upon time. Now let us try to make definition. What is speed equals to? Or what is for definition of speed? Again, speed is distance traveled by body divided by time है मतलब per unit time. Divided by time है मतलब per unit time. So this is the definition of speed. अभी स्पीड इज एसोसिएटेड टू डिस्टेंस. अभी ये हिंट याद रखने का. स्पीड is associated to distance, velocity is associated to displacement. What is velocity associated to? Displacement. तो अगर speed is distance upon time है तो velocity will be displacement upon time. Velocity will be displacement upon time. Now using this formula, can you try to make definition for velocity? Hello? Can you unmute yourself, please? Someone has muted. Can you mute yourself, please? All right. So, velocity is displacement upon time. अभी velocity है ना, उसका definition बनाने का है. मैंने आपको बताया, hint बताया, divide by time है मतलब unit time. So how do you make definition? So velocity, क्या बोला मैंने? Velocity is displacement of a body per unit time. क्या बोला मैंने? Velocity is displacement of a body per unit time. तो ये आपका फॉर्मूला से आपका फर्स्ट पॉइंट भी हो गया, दैट इज डेफिनेशन, एंड फॉर्मूला itself is going to be second point of differentiation. Everybody understood this? All right, चलो. Now next, the third point. अच्छा, यहाँ पे ध्यान दो जरा. Distance, distance is distance is a scalar quantity. हमने जस्ट देखा. डिस्प्ले टाइम इज ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी. तो अगर डिस्टेंस एंड टाइम दोनों स्केलर क्वांटिटी हुए, डिस्टेंस एंड टाइम दोनों स्केलर क्वांटिटी हुए, तो कहना इससे स्पीड भी स्केलर क्वांटिटी हो गया. तो द थर्ड पॉइंट इज द स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी. द स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी. अभी आगे देखते चलो. डिस्प्लेसमेंट हमने लास्ट टाइम देखा ना. डिस्प्लेसमेंट कौन सा क्वांटिटी था? डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. टाइम स्केलर क्वांटिटी है, बट कोई भी एलएचएस आरएचएस में कोई भी एक क्वांटिटी वेक्टर हो गया तो उसका मतलब क्या है? एलएचएस का क्वांटिटी भी क्या हो जाता है? लेफ्ट हैंड साइड का भी क्वांटिटी क्या हो जाता है? वो भी बन जाता है वेक्टर क्वांटिटी. देखो, आई रिपीट इट अगेन. मैंने क्या बोला? ये आरएचएस हुआ अपना, दैट इज राइट हैंड साइड. राइट हैंड साइड में डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी, टाइम इज स्केलर क्वांटिटी.
राइट हैंड साइड में कोई एक क्वांटिटी भी वेक्टर क्वांटिटी बन गया, तो उसके वजह से लेफ्ट हैंड साइड का क्वांटिटी भी क्या बन जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी. सो वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी. व्हाट इज वेलोसिटी? वेक्टर क्वांटिटी. हमने जस्ट देखा था velocity is associated to what? It is associated to the wind, right? wind का क्या होता है? wind का flow का speed भी होता है, उसका डायरेक्शन भी होता है, इसके लिए विंड के फ्लो को वेलोसिटी बोलते हैं, स्पीड नहीं बोलते. एंड हेंस इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. द लास्ट पॉइंट, द लास्ट पॉइंट इज वेरी सिंपल. हमने क्या किया पता है? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का लास्ट पॉइंट उठा के यहाँ पे चिपका दिया. So let us see how to do that. So speed, let me try it. The speed, what is the speed? The speed is either equal to or greater than velocity. If you can recall, distance is either equal to or greater than displacement. तो मैंने क्या किया? Since speed is related to distance and velocity is related to displacement, वो पॉइंट में चेंज क्या हो गया? तो वो पॉइंट में डिस्टेंस के बदले आ गया स्पीड, डिस्प्लेसमेंट के बदले आ गया वेलोसिटी. सो हियर द स्पीड इज आइदर इक्वल टू और ग्रेटर देन वेलोसिटी. अच्छा, कैन यू गेस द फोर्थ पॉइंट? कैन यू गेस द फोर्थ पॉइंट फॉर वेलोसिटी? लेट अस ट्राई इट ऑन, लेट अस ट्राई टुगेदर. क्या आएगा? द वेलोसिटी इज, द वेलोसिटी इज इक्वल टू और ग्रेटर के बदले क्या आएगा? ग्रेटर के बदले आएगा लेस देन स्पीड. So this is the point of differentiation between speed and velocity. This is the point of differentiation between speed and velocity. So now moving on, अभी हमने देखा था डिस्टेंस को हम लोग मेजर करते हैं, हर फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग मेजर करते हैं, तो उसके यूनिट, इट हैज इट, वी गिव इट अ पर्टिकुलर यूनिट. So similarly, speed and velocity, it also has a particular unit. Let us see the units. So now we know that units are of two types, that is MKS unit and CGS unit. Abhi now what are we going to do is, we know the formula. What is speed equals to? Speed is distance upon time. What is speed equals to? Speed is equals to distance upon time. अगर मुझे स्पीड का एम के एस यूनिट देखना है, क्या ढूंढना है? एम के एस यूनिट. तो मैं फॉर्मूला का हेल्प लेगा. व्हाट आई एम गोइंग टू डू? आई एम गोइंग टू टेक हेल्प ऑफ फॉर्मूला. सो ये फॉर्मूला का हेल्प लेने के लिए एम के एस में न्यूमरेटर में डिस्टेंस है, तो न्यूमरेटर में कौन आएगा? मीटर, बिकॉज डिस्टेंस इज मेजर्ड इन मीटर, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या है? टाइम है, तो टाइम इज मेजर्ड इन सेकेंड. एम के स्टैंड्स फॉर मीटर, किलोग्राम, सेकेंड. तो डिस्टेंस इज मीटर, टाइम इज सेकेंड. तो हियर द स्पीड का यूनिट इज मीटर अपॉन सेकेंड, दैट इज मीटर पर सेकेंड. क्या आएगा? मीटर पर सेकेंड. So meter per second is MKS unit of speed. बोलो वापस, क्या बोलोगे? मीटर पर सेकेंड या मीटर अपॉन सेकेंड is MKS unit of speed. Further, MKS का छोटा भाई कौन है? तो MKS का छोटा भाई होता है CGS. क्या होता है? CGS. Again, refer the formula. What is the formula for speed? Speed is equal to distance upon time. What is speed equals to? Distance upon time. तो distance न्यूमरेटर में है, टाइम डिनोमिनेटर में. डिस्टेंस का CGS यूनिट, डिस्टेंस का CGS यूनिट क्या होगा? दैट इज सेंटीमीटर. क्या होगा? सेंटीमीटर. अपॉन टाइम का क्या होगा? तो टाइम का होगा सेकेंड, बिकॉज CGS stands for centimeter, gram, second. So it is centimeter upon second, that is centimeter per second. So this is NKS and CGS unit of speed. Similarly, if you have to remember that the unit of speed and displacement is same.
क्यों सेम होगा? बिकॉज सेम इसके लिए होगा, द रीजन इज वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. व्हाट इज वेलोसिटी? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. सो न्यूमरेटर में डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज मेजर्ड इन मीटर, टाइम इज मेजर्ड इन सेकेंड. तो मीटर अपॉन सेकेंड, इज इट सेम? ये तो हमने अभी देखा, राइट? सीजीएस में भी वही होगा. सीजीएस में क्या होगा? velocity is displacement upon time. Displacement is centimeter. For CGS, it is centimeter. Time is second. So if you see, the unit of velocity and speed are same. दोनों का unit same रहेगा. मतलब वो दोनों क्या है? भाई भाई है. Did you understand this? So here we have seen two types of units, that is CGS unit and that is CGS unit and MKS unit. अच्छा, इसमें से SI यूनिट कौन सा होता है वैसे? SI यूनिट होता है MKS. वेरी नाइस. SI यूनिट होता है MKS. So SI unit of speed is dash. SI unit of speed is dash. SI unit of speed is meter per second. SI unit of velocity is dash. SI unit of velocity is meter per second. CGS unit of velocity is dash. CGS unit of velocity is dash. CGS unit of velocity is centimeter per second. CGS unit of velocity is centimeter per second. MKS unit of velocity is dash. MKS unit of velocity is dash. MKS unit of velocity is meter per second. Let us see this. This is extremely important. So let us again try it without looking. Let us try it without looking. So now I'll ask you questions. Try to answer it. Try to answer it. Fine. Chalo, let us do it quickly. MKS unit of distance is dash. MKS unit of distance is dash. MKS unit of distance is meter. MKS unit of distance is meter. SI unit of velocity is dash. SI unit of velocity is dash. The answer is meter per second. Next, CGS unit. CGS unit of displacement. CGS unit for displacement. It is going to be centimeter. It is going to be centimeter. MKS unit for speed. Can you guess it quickly? MKS unit for speed is meter per second. Meter per second. So this is extremely important, extremely important for you to remember, right? So that's it. Um, Shashikant sir, Shashikant sir. Students, what you can do is quickly make a note of this slide, give heading units, and make a note of this slide. I hope you have pens and pencils with you, pen, pencil, notebook. Quickly make a note of this slide, and you have to remember this. You have 1 minute to make a note of this.